Hello everyone, welcome back to our next in line episode in responding to the Deen Show. The more I watch the Deen Show, the more I'm appalled at the gross misrepresentation of not just the scriptures of other religions but that of Islam itself. If I was a Muslim, frankly speaking, I'd be offended at the way the clear Islamic teachings and scriptures have been misquoted and misrepresented. In this program, in this particular episode, Hamza Andreas Tzortis, and our dear friend Eddie discuss the outcome of a recently released movie which has caused a lot of pain worldwide, which includes murder, around 50-60 of them I guess, arson, looting, the usual works. And I have to say that movie was terribly made, with pathetic effects, horrible acting, and I can say without a shred of doubt, undoubtedly the worst movie made in the history of world cinema. Watching the movie, I was not sure whether it was meant for serious viewing or it was a joke. Well, I saw the episode of the Deen Show which was meant as a response to this movie, and I found it to be equally terrible. I was grossly disappointed. You may ask why. Well, you see, when the movie The Da Vinci Code was released worldwide, Christians across the world, notable theologians, notable apologists, posted their refutations on the Da Vinci Code movie, which highlighted that the incidents depicted in that movie were gross misrepresentation of biblical literature, biblical teachings, and that of history itself. Watching the show, I thought probably Eddie and Hamza would show that the events depicted in this movie never happened, or what a misrepresentation of the life of the Prophet of Islam. But unfortunately, they take the way less traveled. You may ask what? Well, they try to depict as to how Islam has changed the world for the better. Yes, you heard me right. They try to show how Islam has changed the world for the better. Well, I have to give it to Hamza. He's a good speaker, and he has tried to show that Islam actually means equality, peace and tolerance. Again, you heard me right, tolerance. He's a good speaker. He's a good speaker like our dear friend Zakir Naik, but unlike our dear friend Zakir Naik, who at least gives some verses, some references from the various scriptures, context be damned of course, Hamza makes no such attempts. What we are left with is a very well-sounding program. In this particular episode of ours, to be sensitive to the feelings of my dear Muslim brethren, I will say nothing. Well, again, you heard me right. I would say absolutely nothing. I'll be putting up segments of the show. I'll be putting up Islamic literature, verbatim Islamic literature, translated in all the cases by well-respected Islamic theologians, and of course the Quran and the Hadith itself, Sirah literatures. And I leave it to you to decide whether the Deen Show has showcased Islam accurately. Enjoy. Good. Islam. Allah Azza wa Jal, He says, "Ud'u ila sabili rabbik." Call people to the way of Allah Azza wa Jal. Keeping silent is calling no one to anything. Now, it doesn't mean we're going to burn embassies and kill ambassadors. This is haram, and we know this. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, upon whom be peace, he never killed any ambassador. Even Musaylima, the fake prophet, there was a respect. So we don't do things like that. We don't kill innocent human beings. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no harming and no reciprocating of harm. And he said that if you want to be shown mercy, then you have to show mercy and compassion to others.
Go ahead. Go. I mean to cut you off. Before I lose my thought, you said mercy, compassion. Why do people see that as the antithesis to Islam nowadays? It's usually when you say Islam, they think barbaric. They think, you know, swords flying. You know, kamikazes, suicide bombers. Why do you think that? There are two reasons. The first reason is that some of us, we don't get up and we don't warn. We don't get up and we don't talk to people about this beautiful message. Although it's self-image psychology defines who we are as an ummah, as a Muslim community, because the Prophet ﷺ said, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. You won't truly believe, you won't come closer to Allah Azza wa Jal, to the creator of everything that exists, unless you love for others what you love for yourself. And what do we love the most? We love Allah, we love Muhammad upon whom be peace, we love Islam. So if we want to be believers, we have to give it to other people. So people just don't know. The other point is we have systemic issues. What does that mean? It's a big word. Systemic means there is a system out there. There's the media, Fox News, Bill O'Reilly, Pamela Geller. And Muhammad said that we should all be tolerant of each other's religion. Because, you know, people think now that we don't want debate and dialogue. Islam is all about debate and dialogue, all about intellectual discourse. With manners, true civilization. This is why Allah Azza wa Jalla in the Quran says He doesn't like the utterance of evil speech in the public domain. So you see how Islam, we fulfill the objectives of speech, but we don't have this ridiculous concept called freedom to insult. A Muslim mustn't insult anybody. We shouldn't harm anyone. There is no harming and no reciprocating of harm according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Progress, and we're all about the search for truth and knowledge, but couched in human language, with manners, true civilization. Deen Show, and we're discussing this movie that was made insulting the last and final messenger sent to mankind, who came with the same message of Jesus, Moses, and Abraham, calling people to be the best that you can be by worshiping the Creator, not His creation, doing good. And we see some events that are unfolding. Muslims, you know, it's sad to say,
burning flags and embassies and all this. So in the early opening of the show, definitely this is opposite of Islam. Is that clear? Yes. We don't have a green light to go looting and to... Of course not. Islam influenced Edward Pocock. Edward Pocock influenced John Locke. John Locke influenced the whole of Europe in terms of tolerance, and the founding fathers of America. And this goes so back these were to, three things, brother. Yeah. Progress in science, presumption of innocence, and treaties on tolerance and governance. All from Muhammad, upon whom be peace. They don't know who this man is. And Even in the Battle of the Trench, what happened when we were defending Muslims and non-Muslims of Medina, defending everybody, not just Muslims. And the Sahaba, the companions of the Prophet, they thought we're going to be taken over and wiped out clean. The Prophet Muhammad, upon him be peace, what did he do when he had to remove the boulder and he striked it so it could break and there were sparks? And what did he say? He went, Allahu Akbar, God is great, God is great, God is greater. Persia is yours. The world is yours. That's what Islam is. To liberate you from your ego and your desires. To liberate you from social pressure. And we've got so many pressures. By enslaving yourself, worshipping God, loving God. And it frees you from that. And you enter paradise. सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे?
लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो मियाँ आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं, तो आपकी हड्डियों तक के गुर्दे तक देखते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम 1000 पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है, उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा, और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हैं? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। हाँ, खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम मेरे भाइयों, हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह। सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, कंबल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, लेकिन तुम उसे छोड़ करके जब नमाज के लिए भागते हो, अल्लाह फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये देखो बिस्तरा छोड़ के क्यों जा रहा है? मेरे हुक्म की तामील में जा रहा है, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा, तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी, और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों। कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है, जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। Well, brothers and sisters, true to my word, I didn't say anything. But I hope the Islamic literature spoke to you. God bless.